Hello students, today we will be studying power sharing. This is a chapter of social science from class 10. So in this chapter we will learn the following content. What is power sharing? Why we need power sharing? Complexity analysis in Belgium and Sri Lanka. How they use power sharing to handle it. And the last point that we will study is form of power sharing. तो चलिए शुरू करते हैं. Power sharing is a process by which the power is distributed among different organs of government or to different entities. The process is more relevant to the idea of modern democracy. देखिए नाम से ही पता चलते हैं पावर शेयरिंग. सो पावर विल बी शेयर्ड. So each community, each group of a country will enjoy equal share of power. So this is basically a base of idea of democracy. डेमोक्रेसी हम कैसे समझते हैं कि हर लोगों के पास पावर होंगे. So power sharing model actually solidifies this concept that power will be distributed among different organs of government or to different entities, right? The second point that we need to understand why we need power sharing. ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट लिस्ट करे हैं थ्री कारणों को. We have shortlisted three causes. The first one, the idea of power sharing increases stability of the government. It reduces the possibility of contradiction as each group enjoys same share of power. इसमें क्या होता है कि हर ग्रुप के पास सेम शेयर ऑफ पावर होते तो सेटिस्फेक्शन रहते कि हम लोग इक्वल राइट एंजॉय कर रहा है. दैट मीन्स ईच ग्रुप विल फील सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड. सो ऐसे किसी भी ग्रुप के साथ कंट्रडिक्शन में नहीं जाएंगे. सो जो कम्युनल स्ट्राइव होता है, जो एमंग द ग्रुप कंट्रडिक्शन होता है, वो सब नहीं होंगे. So that is the basic need of power sharing, because each group, each community, each person will feel that we have some share of power in the whole framework, so we can enjoy that power. In the eye of the government, in the eye of the country, we are equal. This is a big confidence for a person. The second one is that it helps to keep the country united. It is obvious, अगर लोगों के पास सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलिए सबके पास इक्वल पावर है, सो दैट मीन्स पीपल will feel that we should be united. The country is doing for us, so we should do for the country. So we will be united. That is another reason. And the third point is power sharing justifies the idea of democracy where people enjoy the right to be consulted. अगर सबके पास पावर होता है तो गवर्नमेंट भी किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, किसी स्टेप लेने से पहले पूछते हैं पब्लिक से through the proper forum that whether we should take it or not. So people will be consulted, so people will feel confident and secured. Now, as we have seen in our content list, the complexity analysis of Belgium and Sri Lanka. So first we go for Belgium. Belgium में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिक्स लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन है. जैसे डाच स्पीकिंग 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40%, जर्मन स्पीकिंग 1%. सो 59% ऑफ द पॉपुलेशन डच में बात करते हैं, 40% फ्रेंच में बात करते हैं, 1% जर्मन में बात करते हैं. और बेल्जियम का जो कैपिटल है उधर पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है. डच स्पीकिंग कम है 20%, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है 80%. बेल्जियम अगर सेंट्रली हम लोग देखते हैं तो डच स्पीकिंग ज़्यादा है 59%, फ्रेंच स्पीकिंग कम है 40%. बट ब्रसल में आके इट गेट्स चेंज्ड, डच स्पीकिंग 20% है, फ्रेंच स्पीकिंग 80% है. इधर पे क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन
रह गए थे। फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन इज लेस बट दे आर रिच एंड पावरफुल। नाउ इट इज अ natural tendency, it is a propensity that government always favor the rich and powerful people we have seen in the history. So once Dutch speaking population failed, unprotected and insecure, वी हैव पॉपुलेशन, डच स्पीकिंग लोग सोचते थे कि हम लोग के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा मिल रहा है पावर। सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर बेल्जियम गवर्नमेंट। अब श्रीलंका में क्या हुआ? सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। इन श्रीलंका सिंहला speaking language population is 79% people and Tamil speaking population is 18% people. नाउ तमिल स्पीकिंग में भी दो भाग है, एक है इंडियन तमिल में जो बात करते हैं वो 5% है, और श्रीलंका का जो तमिल है उसमें जो बात करते हैं 13% है। नेचुरली what happens that Sinhala speaking people are mostly Buddhist and Tamil speaking people are mostly Hindu or Muslim. इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया? आफ्टर freedom, Sri Lankan government tried to foster Sinhala language and Buddhist religion. तो इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्वाइट शार्प था। उन्होंने जो किया, उन्होंने सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज को और सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को ज़्यादा फेवर किया। दे हैव फेवर्ड सिन्हाला स्पीकिंग population more and they have tried to foster Buddhism. इसका मतलब होता है जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो जनरली ये फील किया कि हम लोग इस देश में सिक्योर नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। सो दैट वाज द कन्फ्लिक्ट फॉर, दैट वाज अ चैलेंज फॉर श्रीलंकन गवर्नमेंट। Now first we will see how Belgium handled the problem. From 1970 to 1993, Belgium constitution introduced four major amendments. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मेजर अमेंडमेंट्स लेकर आया बेल्जियम गवर्नमेंट उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट करने के लिए। फर्स्ट क्या है? नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन मिनिस्ट्री विल बी इक्वल। तो क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री है बेल्जियम गवर्नमेंट में उसमें जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उसका शेयर इक्वल है। तो मिनिस्ट्री के पास तो पावर होता है, मिनिस्टरों के पास ही तो पावर होते हैं। अगर इसमें इक्वल एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है इसका मतलब जो भी राइट है वो इक्वली जाएंगे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, है ना। Then special law requires the support of majority of members from each group. Third, no single community can enjoy the power. Fourth, in Brussels there is separate government. देखो ब्रासल्स में पिक्चर उल्टा था, डच स्पीकिंग कम था, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा था। बट इन ब्रासल the government too shares equal participation from Dutch and French speaking group. सेंट्रल में डच ज़्यादा था, फ्रेंच कम था। ब्रासल में डच कम था, फ्रेंच ज़्यादा था। लेकिन दोनों ही केस में हम देख सकते हैं कि बोला गया है कि द गवर्नमेंट टू शेयर्स इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप। इसका मतलब है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन इन ईच केस दे विल एंजॉय इक्वल पावर। दैट इज a wonderful idea. And the last point is, apart from central and state government, there is a community government to acknowledge the participation of each linguistic group. अब community government क्या है? Community government is elected by the people belonging to one linguistic group, Dutch, French or German. No matter where they live, they enjoy the right to elect. कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहते हैं? कल्चरल, एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन they have amended, it is bit complex, but the good thing is that though the process is complicated, but Belgium was able to avoid the strife जो स्ट्राइफ हुआ था
डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच टाइप होने की पॉसिबिलिटी थी एंड डच स्पीकिंग पीपल वर फीलिंग दैट दे वर इनसिक्योर एंड अनप्रोटेक्टेड, ये कंसेप्ट उन लोगों को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब अब दोनों ही ग्रुप सोचते थे चलिए इस देश तो अच्छा है वास करने के लिए, फॉर living the country is quite good because we are enjoying equal power. That is why we should live here. We should not get into the strife or contradiction with each other because we are enjoying equal power. So, this concept of amending the constitution has satisfied the both group, right? Now people can enjoy their right and retain their unity. But in Sri Lanka, we have seen some different pictures. That is majoritarian direction of Sri Lanka. Government declared Sinhala as the only official language in 1956. That this has introduced the idea of preferential politics. It tried to foster Buddhism. I have already told. श्रीलंका में ऐसा कोई एफर्ट नहीं दिखा गया. In Belgium, we have seen they are trying to maintain the unity. They are trying to get their country united, but in Sri Lanka, we have not seen such picture. They have always preferred Buddhism and Sinhala speaking population over Tamil speaking population. So this is called preferential politics. This idea created strife. strife तो होगा. Sinhala people are enjoying more right than the Tamil speaking population. So Tamil speaking population तो stripe में जाएंगी. And the third one, Tamil speaking people launch parties and started struggle for their right. They claimed a different state. ऐसा तो expected है ना. अगर मुझे नहीं मिल रहा है उससे मिल रहा है उसे मिल रहा है, that means I will feel that I should do something to snatch away my right, to get my right back. So we should launch parties, we should start struggling for our right, we should claim a different state. ऐसे ही हुआ श्रीलंका में. And that is why Sri Lanka faces several civil war. So Sri Lanka failed but Belgium passed. That is the concept of power sharing. That is the contribution of power sharing, we can rather say. Now form of power sharing. पहले तो among different organs हम लोग के पास में जो पावर है ना वो 3 भाग से we can see जाता है. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी. नाउ हाउ दे आर एंजॉइंग द पावर विल सी लेटर. बट एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स अगर पावर शेयरिंग होता है तो लेजिस्लेटिव के पास भी पावर होता है, एग्जीक्यूटिव जैसे प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है, जुडिशियरी न्याय व्यवस्था के पास भी पावर होता है. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हियर द पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स. नो ऑर्गन एंजॉयस अनलिमिटेड पावर. इट इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस की अगर लेजिस्लेटिव ने कोई गलत कदम उठाए देन जुडिशियरी कैन चैलेंज इट. अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे the judiciary can challenge it. So these three systems are quite interdependent. So no organ enjoys unlimited power. That is the beauty of this part. The second point is among different levels. जो पावर होता है वो सेंट्रल के पास भी होता है, देन स्टेट के पास भी होता है, देन लोकल गवर्नमेंट के पास भी होता है. दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सेंट्रल के पास थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टेट के पास थोड़ा कम होता है, लोकल के पास और कम होता है, लेकिन दैट इज kind of decentralization of power. Here the power has been distributed into different levels. Central, state and local government can be taken as example as we have seen. ठीक है ना. The next part is social community. Power sharing through social community is an important concept. It addresses the weaker social community or groups who need to be reserved. Our constitution allowed
to reserve seats for such communities, है ना? सोशल कम्युनिटी के हिसाब से हमारे हम लोगों का जो पार्लियामेंट है उसमें सीट रिजर्व है ना. सो दैट इज द कंसेप्ट. मीन्स वीकर जो सेक्शन है सोसाइटी का, दे विल ऑल्सो फील दैट वी डू हैव पावर, हम लोग के पास भी पावर है. दैट इज वाई सीट शुड बी रिजर्व फॉर देम. दे शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द process. That is the main funda, that is the main reference of power sharing through social community. And the second one is community government follows the same power sharing model. We just have seen in the case of Belgium, the community government, we have just coined out the term community government, and it follows the same power sharing model. Through social community we are channelizing, we are distributing the power. And the last one is through political parties and pressure groups. I have forgotten to write groups here. So through political parties and pressure group, different political parties compete for power. We have seen in the time of election they fight for power, but once if a party gets elected, it is not for infinite period. It changes after a fixed period. For our country, it changes for every 5 years, right? So you can see that power gets distributed through different political parties over the years. पहले कांग्रेस के पास पावर थे, अब भाजपा के पास पावर आए. मीनवाइल कुछ टाइम के लिए कोalition गवर्नमेंट के पास भी पावर थे. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. एक पार्टी के पास फॉर इनफाइनाइट पीरियड पावर नहीं रहते हैं. सो every single political parties enjoy the power over the years. Sometimes different political parties formed the alliance and shared the power. In case of coalition government, we have seen uh, actually now coalition government is forming. Since 1975, most of the government is in the form of coalition government. We have seen that in 1991 नरसिम्हा राव जी का जो गवर्नमेंट था वो भी काइंड ऑफ कोalition था. यूपीए 1 that was coalition government, यूपीए 2 that was coalition government, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी coalition government थी. So coalition government is also a concept where different parties join, different parties share the power. So बीजेपी के पास पावर नहीं है, सिर्फ बीजेपी का जो एलाई है उनके पास भी पावर है. सो पावर इज गेटिंग शेयर्ड. And the third one is interest groups like businessman, industrialist, farmer, etc. to participate in this power sharing process either through government committee or decision making process. So this is the form of power sharing. That is the class, that is the concept of power sharing model. So thanks. You can register to our course for getting the daily assignment and for clearing your doubt. It is a paid course. The class is free that you are watching right now. So thank you. There is a few concepts that I have written. Enjoy your study, love your lesson, future will be great. So thank you. Stay tuned.